वेलकम बैक टू अनदर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आईएससी फिज़िक्स क्लास 11 कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन चैप्टर 7 फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है अ बॉडी रोल्ड ऑन अ सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। तो यहाँ पर u हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, s 50 मीटर हो जाएगा, म्यू के जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें निकालना है, और g 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पर रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है और mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू के r, ये हमारा फोर्स है ma। तो हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल टू mg होता है और f इज इक्वल टू म्यू के r। तो r इज इक्वल टू mg और f इज इक्वल टू म्यू के r। तो हमारा fs हो गया म्यू के mg, fs की वैल्यू ma भी है, तो ma इज इक्वल टू म्यू के mg, एक्सेलरेशन यानी कि म्यू के g। तो हम लोग को यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो हम लोग के पास ये रिलेशन आ गया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू के g, और हम लोग को पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे u की 10, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रेस्ट पर आ जाता है वैल्यू बाद में, तो v हमारा 0 हो जाएगा। तो u 10 v 0 और एक्सेलरेशन म्यू के जी इंटू एस। तो u 0 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी इंटू एस, यानी कि 2 म्यू के जी इंटू एस इज इक्वल टू 100 और म्यू के जी एस इज इक्वल टू 50। तो उसके बाद म्यू के और g की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 50। 50 कैंसिल हो गया, और फिर म्यू के हमारा हो जाएगा 1/10 और म्यू के की वैल्यू हो गई 0.1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 0.1। सेकेंड, अ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ horizontal surface is pulled by a constant horizontal force 1.2 kg force. The coefficient of friction between block and surface is 0.3. Find the acceleration in terms of g. तो इसका हम लोग देख पा रहे हैं, मास हमें 1.5 kg दिया हुआ है, ऊपर ऐड करेगा रिएक्शन फोर्स, नीचे mg, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स fs, और यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है 1.2 kg फोर्स, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें 0.3 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट कर रहा है यहाँ पर। नेट फोर्स ma होता है, यानी कि f माइनस एफ एस इज इक्वल टू ma। यहाँ पर हमारा 1.2 g हो जाएगा, माइनस एफ एस इज इक्वल टू म्यू के आर इज इक्वल टू ma। 1.2 g माइनस म्यू के आर इज इक्वल टू mg, यानी कि म्यू के mg इज इक्वल टू ma। तो 1.2 g 0 इंटू माइनस 0.3 इंटू 1.5 इंटू जी इज इक्वल टू 1.5 इंटू a। 1.2 g माइनस 0.4 g इज इक्वल टू 1.5 a। ये हमारा हो गया 0.75 g इज इक्वल टू 1.5 a, और इससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.7/1.5 इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2। हमें g के टर्म्स में निकालना था, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 blocks each of mass 3 kg are connected by a light cord and placed on a rough horizontal surface. When a horizontal force of 20 Newton is applied on the block, its acceleration is 0.5 meter per second square is produced in each block. Find the tension in the string and the frictional force which is same on the two blocks. तो इस क्वेश्चन का हमारा डायग्राम ऐसे रहेगा। तो दोनों की मासेस 3 kg हैं, तो दो ब्लॉक्स दोनों की मास 3 kg, हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है, दोनों का टेंशन D दिया हुआ है यहाँ पर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स Fs यहाँ पर भी है और फ्रिक्शनल फोर्स Fs यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है, और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स पर एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 20 माइनस टेंशन माइनस एफ एस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो हमारा है 20 माइनस टी माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, जिससे 20 माइनस टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5, यानी कि 20 माइनस टी माइनस एफ एस इक्वल टू 1.5, इक्वेशन 1। ये हमारे फर्स्ट ब्लॉक पे फोर्स लगा है, नेट फोर्स, फर्स्ट ब्लॉक का नेट फोर्स है। सेकेंड ब्लॉक का नेट फोर्स आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टेंशन है यहाँ पर, और एफ एस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5। तो ये हमारा हो गया टी माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, टी माइनस एफ एस इक्वल टू 3 इंटू 0.5, टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू 1.5। तो ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। इन दोनों को हम जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस टी माइनस एफ एस माइनस 1.5 इक्वल टू 0, 20 टी माइनस एफ एस माइनस 1.5 इक्वल टू 0, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, 20 माइनस 2 एफ एस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 2 एफ एस इक्वल टू 3,
2fs इक्वल टू 20 माइनस 3 एंड fs इक्वल टू 17/2, यानी कि हमारा fs जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो 8.5 न्यूटन आ गया। और यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन t माइनस fs इक्वल टू 1.5 में fs की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा 10 न्यूटन। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स fs आ गया 8.5 न्यूटन और टेंशन आ गया हमारा 10 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज 0.4. Find the shortest distance within which the car can be stopped, and the value of g is 10 meter per second minus square. So here u is equal to 20 meter per second because the speed is given, initial speed is given, final speed will be 0 because it will come to rest after traveling. Then coefficient of friction is 0.4, g is 10 meter per second, v is equal to 0 which is 0, and we know acceleration is equal to coefficient of friction into g. So a is equal to mu s into g, and mu s value is 0.4 and g is 10, so acceleration will becomes 4 meter per second square. Now in the formula v square is equal to u square plus 2 v square minus 2as, we will put the value. The formula will be v square is equal to u square minus 2as. Here I have written plus by mistake, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा प्लस नहीं माइनस होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एस, यानी कि 400 माइनस 8s इक्वल टू 0, 8s इक्वल टू 400 यानी कि s इज इक्वल टू 400 अपॉन 8, तो s हमारा 50 मीटर आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर। अ कार गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. Show that the total frictional force opposing the motion when brakes are applied is 1/4 of the weight of the car. Given value of g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं. u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू 10 मीटर, v इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as. व्हेन वी विल पुट द वैल्यू हियर, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 10 which is equal to 49 minus 20a. 20a is equal to 49 and hence the value of acceleration will be 2.45 meter per second square. Acceleration is equal to mu kg, and so mu k is equal to acceleration upon g, which is equal to 2.45 upon 9.8, and hence value of mu k is equal to 0.25. So when we will put in the formula fs equal to mu k r, which is equal to mu k mg, we will get fs equal to 0.25 into m into g, and 0.25 is 1/4. So fs equal to 1/4 mg, and weight of car which is acting vertically downward, here this is the car and it acts vertically downward, so weight of car is equal to mg. So we can see here weight of car is mg and frictional force is 1/4 mg. So this one is only asked in the question, that show that frictional force is equal to 1/4 of the weight of the car, and it's 1/4 of the weight of the car. Question number 6, a fireman of mass 80 kg slides down a pole during a rescue mission. The force of friction is constant at 720 Newton. Find the acceleration of the man. G is equal to 10 meter per second square. So let's suppose that this is our pole. This is the man who is of mass 80 kg, and frictional force is constant frictional force 720 Newton, and the mass is 80 kg, so weight will act vertically downwards, so mg is equal to 800 Newton. So we know the formula, net force is equal to force minus frictional force equal to ma. So 800, which is our force, and fs, which is 720 Newton, and mass is 80 into acceleration. So 80a is equal to 800 minus 720, which is equal to 80. So hence acceleration is equal to 1 meter per second square. Question number 7, a block placed on a rough inclined plane of length 4 meter just begins to slide down when the upper end of the plane is 1 meter high from the ground. Calculate the coefficient of static friction. So this is our inclined plane, and this is angle theta. So 4 meter is the length of inclined plane, and 1 meter is the upper end of the slide. This is, just suppose this ground as x. So by Pythagoras theorem, 4 square is equal to x square plus 1, and hence 16 is equal to x square plus 1, and x value is root 15. So now we can take out the sine theta and cos theta from this inclined plane.
sin theta will be equal to 1 by 4 and cos theta will be equal to root 15 by 4. This value is root 15. So base upon hypotenuse is 4. So root 15 upon 4. Now body just begins to slide. So when the body just begins to slide, g cos theta is equal to g sin theta, and with that mu, the value of mu, so mu g cos theta is equal to g sin theta. So g cancelled. So mu is equal to sin theta upon cos theta, and hence tan theta is equal to mu s. So tan theta when it is equal to mu s, so mu s will be equal to sin theta upon cos theta, and we will put the values of sin theta and cos theta. Mu s equal to 1 upon 4 upon 15 upon 4. तो वैल्यू हमारी mu s की आ गई 1 upon root 15, और tan theta 1 upon root 15 और root 15 1 upon root 15 की वैल्यू 0.258 होती है, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 0.258. Question number 8. A block rests on a plane of variable inclination. Find the incline of the plane with the horizontal at which a block just slides down. The coefficient of friction between the block and the plane is mu s equal to 1 upon root 3. तो इस क्वेश्चन में हमें mu s दिया हुआ है 1 upon root 3, यानी कि tan theta is equal to mu s, tan theta is equal to 1 upon root 3, tan theta is equal to tan 30 डिग्री, 1 upon root 3 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है, थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री. तो बस हमें इतना ही निकालना था, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 9. A block of mass 0.05 kg when placed on a rough 15 degree inclined plane slides down without acceleration. Inclination is then increased to 30 degree. What would be the acceleration of the block? G is equal to 9.8 meter per second square. So this is our diagram here. This is our inclined plane, and this is 15 degree, and now it is increased to 30 degree. So it is reaction force, and it is vertically downward mg. This is our mg cos theta and mg sin theta. This value is 30 degree. It is 0.05 kg. Here our force acts, and here it is mu s r, which is frictional force. So we know mu s is equal to tan theta. So mu s is equal to tan 15 degree, which is equal to 0.2679. So now we know mg sin theta. This is mg sin theta here. So mg sin theta minus mu s r equal to ma, and r is equal to mg cos theta. So r equal to mg cos theta. So we can put the value here from 1 and 2. This is equation 1, this is equation 2. So from 1 and 2 we get mg sin theta minus mu s mg cos theta equal to ma, and m can be cancelled from both sides, and g, so we'll get m into g sin theta minus mu s g cos theta equal to ma. Now we can take g common on the left hand side. So g sin theta minus mu s cos theta is equal to acceleration. Acceleration is equal to g is 9.8, sin theta 30 degree minus mu s is 0.26, and cos theta is 1 upon cos 30 is root 3 by 2. So half minus 0.26 into root 3 by 2, and root 3 is 1.732. So 9.8 minus 9.8 into 1 minus 0.46. 0.26 into 7.32 is 0.46, and upon 2. So half minus 0.26 into 1.732 upon 2. 9.8 into half minus 0.46 upon 2. 1 minus 0.46 is 0.54. So, and here it will be cancelled, so it will become 4.9. So 4.9 into 0.454 will be equal to 2.63, and hence acceleration is equal to 2.63 meter per second square. A body is in limiting equilibrium on a rough plane inclined at 30 degree with the horizontal. When the inclination is increased to 45 degree, the body slides down with acceleration. Find this acceleration. Take g is equal to 9.8 meter per second square. This is 10th question. So here this is our diagram. This is the same question as 9th one. It is mg. It is mg sin theta, mg cos theta. Theta is 30 degree, and it is increased to 45 degree like the same one last only. So here will be mg sin theta minus mu s r equal to ma, and r equal to mg cos theta. From these two equations we will get mg sin theta is equal to mg sin theta minus mu s mg cos theta is equal to ma, and hence after cancelling m we will get g into sin theta minus mu s cos theta is equal to acceleration. So acceleration is equal to 9.8 minus 9.8 into sin 45 degree minus 1 by root 3 cos. Now tan theta is equal to mu s, so tan 30 degree, so it is mu s will be equal to 1 upon root 3. So 9.8 into sin 45 degree plus 1 upon root 3 cos 45 degree. After solving this, 9.8 into 1 upon root 2 minus 1 upon root 3 into 1 upon root 2, we will get the acceleration 9.8 into 0.732. It will be 9.8 into 1.732 minus 1, and with that we will get 0.732 upon 2.449, and hence acceleration we will get as 2.929 meter per second square, and after rounding it off we get acceleration as 2.93 meter per second square. तो acceleration हमारा 10th क्वेश्चन का 2.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. लास्ट क्वेश्चन नंबर 11. A body slides down from rest
from the top of a 6.4 meter long rough plane inclined at 30 degree with the horizontal. Find the time taken by the block in reaching the bottom of the plane. Take mu k equal to 0.2 and g equal to 9.8 meter per second square. This is our inclined plane. mg is acting here, mg sin 30 and mg cos 30 here, 30 degrees here also. This is our acceleration, and this distance is given as 6.4 meter. So r is equal to mg cos 30 degree, mg sin theta minus mu s r equal to ma. This is from the 9th and 10th question like only. So after that cancelling, we get g into sin theta minus mu k cos theta is equal to acceleration, and acceleration is equal to 9.8 minus 9.8 into sin 30 degree minus 0.2. This our mu k is given this time, it's 0.2 into cos 30 degree. तो acceleration हमारा हो गया 9.8 into half minus 0.2 into root 3 by 2, 9.8 into 1 minus 0.346 upon 2. तो ये हमारा हो गया 4.9 into 0.656 और एक्सेलरेशन हमारा आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें टाइम निकालना है, तो हम पे एक फॉर्मूला पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस 6.4 है, एक्सेलरेशन हमारा 3.2 है, और इससे हमें टाइम निकाल लेना है. तो 6.4 और यू हमारा 0 दिया हुआ है क्योंकि रेस्ट से बॉडी चल रही है. तो 6.4 इज इक्वल टू 0. 6.4 is equal to 0 into t plus half into 3.2 into t square. 0 into t will be 0 only. 6.4 is equal to 1.6 t square. तो 6.4 upon 1.64 हो जाता है. t square is equal to 4 and hence t is equal to 2 seconds. So this is our question number 11. Answer t is equal to 2 seconds. Time is 2 seconds. So we have done all the 11 questions of Nageen Prakhashan Physics Class 11 book, Friction chapter. Thank you friends for watching this video. Please like, share and subscribe for getting the solutions of these types of questions. Have a nice day friends. Goodbye. Take care.